Assalamu alaikum, students. I hope you are doing good. So now we are going to start with the next lecture, and that is about the muscular system. So it's very important to know about what muscular system is all about. Everybody knows we do has a skeleton in our body that has been made of bones, and with with all the bones there are set of muscles which are connected with the bones. मतलब कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है उसके साथ ये मसल्स अटैच होते हैं तो हमारी बॉडी को शेप मिलती है। अगर हम कॉमनली बात करें जैसे हमारे पास रिबोट्स हैं, तो रिबोट्स में सिर्फ क्या चीज़ है मिसिंग, क्या है, मसल्स मिसिंग है। फॉर रेस्ट दे आर सम हाउ डिजाइंड लाइक अ ह्यूमन बॉडी बेस्ड स्केलेटन, सिर्फ उनमें मसल्स मिसिंग है। अब हमारी बॉडी में हम बात करते हैं कि जो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं जॉइंट्स की मदद से, तो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलिजीनियस सब्सटेंस मौजूद है जिसको हम बोलते हैं लीगामेंट्स। वो जो कार्टिलिजीनियस कोलेजन बेस्ड मसल फाइबर्स हैं जिनको हम लीगामेंट्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब सिमिलरली हमारे पास जब बोन्स के साथ मसल अटैच होते हैं तो वो भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की मदद से अटैच होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेंडन्स। अब टेंडन्स की दो टाइप्स हैं, एक तो रोप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो रोप लाइक टेंडन्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी समहाउ स्ट्रॉन्गर, और जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर हैं ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, दे आर कंसिडर्ड टू बी समहाउ वीक। ओके, सो द अल्टीमेट टॉक इज अबाउट कि हमारी बॉडी में स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच होते हैं और एक पूरी बॉडी बन जाती है। तो अब हमने इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस जो चीज़ें करनी है, एक तो हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स हैं, मसल एक्चुअली हैं क्या, व्हाट इज़ दियर डेफिनेशन। एक तो हमने मसल्स को जानना है कि मसल्स क्या होते हैं। दूसरी बात हमने ये जाननी है कि कितनी टाइप्स के मसल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। ओके, और हमें पता है कि बेसिकली जब हम मसल्स को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि दीज आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़। ओके, और फिर इसी तरह हमारी बॉडी में तकरीबन 600 टाइप्स के मसल्स मौजूद हैं जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ गया हुआ है। और हम बोलते हैं ये टेंडन्स की मदद से मसल्स अटैच होते हैं विद द बोन्स। ओके, और फिर एक मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं क्योंकि पूरे स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच होते हैं। जैसे हेड एंड नेक के मसल्स अलग हैं, फिर हम बात करते हैं बॉडी के लिम्स की, तो लिम्स के मसल अलग हैं, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये सारे ट्रंक के मसल्स, ये सब मसल्स अलग हैं। तो हम इन सारे मसल्स को देखते जाएंगे आगे जाके। तो मैंने यहाँ पे ही बात कर दी कि हमारे पास टेंडन्स दो तरह के होते हैं, एक हमने बोल दिया रोप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और एक हैं फ्लैट स्ट्रक्चर्स। तो स्केलेटल मसल्स की फिर हम बात करेंगे आगे जाके, स्मूथ मसल्स की बात करेंगे और कार्डियक मसल्स की भी बात करेंगे हम। लेकिन ये सब जानने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि मसल का स्ट्रक्चर है क्या, मसल किससे बने हुए हैं। तो हम ये वेरी सिंपल बात है कि मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मस्कुलर फाइबर्स, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। अब बॉडी में कौन से मसल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, स्केलेटल मसल का, स्मूथ मसल का या कार्डियक मसल का। जिस मसल का हम स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं वो मैटर करेगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत मसल्स की फंक्शंस में चेंजेस आएंगी, कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी। तो हम वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस को आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हम जितनी भी यहाँ पे डिस्कशन हुई है ये बेसिकली ये बताती है, ये हाईलाइट करती है कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है उसके साथ मसल्स कैसे अटैच हुए हुए हैं। ऑलराइट, और अब हम ज़रा बात करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लाइक मस्कुलर अरेंजमेंट्स, कि हमारी बॉडी में स्केलेटन के साथ जो मसल्स अटैच हुए हुए हैं तो किस
तरह से, किस अरेंजमेंट के साथ अटैच हुए हैं. So there are two arrangements for the muscular attachment. One of them is antagonistic and the second one is synergetic. Antagonistic arrangement of the muscle works in pairs. मतलब एक मसल एगोनिस्ट है तो दूसरा मसल एंटागोनिस्ट है. दीज मसल वर्क्स इन द पेयर्स. जैसे बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स हैं, ये पेयर्स में काम करते हैं. अगर हम बात करें सिनर्जेटिक मसल्स की, तो हमारी पूरी बॉडी में जब मसल्स एक ही जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं, मीन इफ वी आर वॉकिंग, during the walk, what happens? All the muscles are just focusing on the walk. Mean our brain is gonna control them. Mean all rest of the muscles are gonna somehow not gonna dominate their activities. However, we can say the skeletal muscles are gonna dominate at that time. सो जो डोमिनेशन का फिनोमेना है, दैट हैज़ बीन नोन एज सनर्जिज्म इन द बॉडी, कि सारे मसल्स एक ही तरह का जॉब कर रहे होते हैं. तो इट्स मीन एंटागोनिस्टिक मसल्स वर्क्स इन ग्रुप्स और synergetic muscle works in team. So these are the key differences which everybody should know. All right. So further, a lot of movements in our body are associated with the antagonistic and synergetic muscles. All right, role of brain. It has been considered very vital how brain plays the role. Mean, suppose if a person is gonna visit a gym center, all right, and he wants to grow his bicep or tricep, what happens? Brain allows that person, he need to use those exercise equipments which are particularly gonna improve or enhance the skeletal muscles, or we can say the muscles of his bicep or tricep muscles. But if a person want to improve or ensure synergism within the body, the person will give equal time to all the exercise equipments. Mean he will try all the exercises. So what happens? Such exercises will maintain synergism in the body of that person. So, brain is the ultimate stakeholder who decides either the person is gonna perform, either the person is gonna enhance antagonistic or synergetic muscles. So, we can say brain is considered to be the integral organ or the stakeholder. As cerebrum is concerned more with the, we can consider cerebrum is most concerned with this decision. All right. Where however, if we want to talk about the cerebellum part, so cerebellum part is actually responsible with the decision making or the decision power. So however, we declare coordination takes place below the level of conscious, and that has been regulated by cerebellum. So it means cerebellum is responsible for the perceiving of the signals. Mean either the person need to prefer those exercises who demands antagonism, or the person whose exercises demand a synergism, that has been perceived by the cerebellum. But if there is need of synergism, that has been somehow maintained by the cerebellum part of the brain, not cerebrum. Cerebrum is gonna perceive the things, but synergism has been maintained by the cerebellum part of the brain. So it means our muscles. If I need to sum the all story, so it means uh, we consider brain is an do has an ultimate power to decide or to control or regulate our muscular arrangements as well. Okay. The next essential or the key term is muscular tone. Very, very important. Muscular tone simply tells us about how muscles are gonna contract.
If we want to speak about the younger one, the adult one, and the elderly one, what happens in younger one or adults? The contraction of muscle seems to be more, where in case of elderly, the muscular contraction seems to be somehow compromised. So muscular tone is actually the contraction capacity of our muscles. तो इसको सिर्फ हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि बड़ी उम्र में लोग ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं उनके, ये छोटी उम्र में उनको चलते हुए वॉक करते हुए गिरने के चांसेस होते हैं। तो वजह ये होती है कि जब एज बढ़ती है इंसान की तो उसके साथ साथ मस्कुलर फाइबर डैमेज होते हैं और वहाँ पे फैट्स आके डिपॉजिट हो जाती हैं। तो उन फैट्स डिपॉजिट होने की वजह से ब्रेन क्या करता है कि जो मस्कुलर फाइबर्स डैमेज हो गए हैं उनको फिगर आउट नहीं कर सकता, उनको मैप नहीं कर सकता, लोकेट नहीं कर सकता। तो तब उस वजह से लोग गिरते हैं चलते हुए या कुछ जब वो बड़ी उम्र में पहुंच जाते हैं, और बच्चों में भी ऐसे ही होता है। क्योंकि वो मसल्स फैट से रिप्लेस हुए हुए होते हैं। अब इसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या होता है कि मसल दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फैट के रिजर्वायर्स यूटिलाइज हो जाते हैं और इस तरह से लोग एक्टिव रहते हैं, वो गिरते नहीं हैं या उनकी बॉडी में एक पोटेंशियल या कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रहती है। तो मस्कुलर टोन से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ मस्कुलर contractions tells us about the muscular tone. Simple. So there are number of exercises pattern like isotonic contraction exercise pattern, isometric exercise patterns, concentric exercise pattern. These exercises are actually helpful for ensuring or maintaining a balanced muscular tone. I hope it makes sense. So rather than the muscular tone, there is role of exercise. How exercise gonna improve the muscular tone that matters. Muscular sense. Muscular sense is also the ability of a person. So he want to know कि either the brain wants to know either the muscles are intact or the muscles are not being intact. So muscular tone is like the brain ability to know where our muscles are and what they are doing without our having to consciously look at them. Mean what happens? We are not consciously tracking our muscles. So brain is actually gonna perform that job. So this sort of phenomena is to be declared as muscular sense. So muscular sense means brain is gonna control our muscular movements without bothering us. So that is actually considered to be a muscular sense. And if we want to talk about how energy comes for muscular movement, many times ATP are considered to be a source of energy for the muscular movement. And similarly, from where ATP does come? So ATP comes from means glycogen, glucose, and similarly somehow we declare like phosphokinase. These are some of the enzymes who provides ATP to the muscle. Creatine kinase. These are some of the resources from where muscles get energy. And somehow if we want to speak how muscles are gonna get oxygen, so hemoglobin is responsible to provide somehow oxygen to the muscular cells, and similarly myoglobin is also responsible for provision of oxygen to the muscles. So it means muscles get energy through ATP, and similarly in parallel to the ATP, how muscles are gonna take the energy. So it depends, like they do get energy from creatine phosphate, and similarly they get energy from creatine kinase. These are enzymes which help for the breakdown of certain molecules. All right, glycogen is considered to be a reservoir. Hemoglobin, myoglobin, these are the resources which provides energy to the muscles. अब हम बात करते हैं कि ये जो मस्कुलर फाइबर है
एक मसल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या मौजूद होता है। अब मस्कुलर फाइबर में हमें पता है एक तो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं मसल्स में, बिकॉज दे वांट टू डिटेक्ट आइदर मसल्स आर एक्टिव, अलाइव और डेड, one thing. So if there are neurons, there must be a neuromuscular junctions as well. And acetylcholine is a kind of chemical which is